आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी, क्रिएटिव और फन आइटम है जो कि मैं आपको बनाना बताऊंगी आउट ऑफ कैंडल जार लिड, जो कि कैंडल जब ख़त्म हो जाती है तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। तो उनसे मैंने टी लाइट कैंडल होल्डर बनाए हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो वी नीड कैंडल जार लिड इस तरह के, और मेरे पास तो और भी थे डिफरेंट स्टाइल, वो भी मैंने यूज़ किए हैं। तो ये है एक, और इसको हम फ्लिप करके डिज़ाइन करेंगे और फिर इसमें हम टी लाइट कैंडल लगाएंगे। So first of all, we need to remove this, and it's very easy and simple. You just have to be careful. You need a knife or any sharp thing, or इसको just open it like this, and that's all. It just came off. तो अब इसको हम साइड में रख देंगे. We might need it for any other project, because I love doing DIYs out of leftover things, or जो चीज़ें यूज़ नहीं होती. तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने चूज़ किया है, it was a big roll of these plastic fans जो कि मैंने क्राफ्ट स्टोर माइकल से लिया, और मुझे चाहिए I picked some flowers like this, and I'm gonna decorate with that. So मैंने पहले ही ये काट के रखा हुआ है, मेजर करके इसके अराउंड ऐसे मैं लगाऊंगी, and then very simple, I'm just gonna decorate, and then I'll show you the other candle holders that I've already made. So let's get started. Okay, so these are all my cute little spring tea light candle holders. Please let me know in the comment box that which one do you like better. This is the one, and I put a little birdie on it, and then these are little modern look that you can use in any season. And I think my favorite is this one. I love this flower one. It's perfect for spring. So I'm gonna decorate my spring table, and then I'll show you.